Good morning, students. This is Rohtash Sharma, Assistant Professor in Mechanical Department in RPIIT Technical and Medical Campus. Today, our topic is inventory. Every students know about inventory. Inventory means stocks. So now we will discuss about inventory. Firstly, there are two types of inventory, or we can say nature of inventory: dependent demand and independent demand. Dependent for demand for one product is linked with demand for another product. मीन्स अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड है और वो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से लिंक है, सच एज कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज लाइक इन आवर ऑटोमोबाइल सेक्टर। इफ़ एक गाड़ी की डिमांड हो रही है तो उसके साथ जितने भी पार्ट्स लगते हैं गाड़ी के साथ, टायर हो गया, बॉडी हो गया, इंजन हो गया, तो सबकी डिमांड होगी। तो दिस इज़ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इज लिंक्ड फॉर विद द डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट। Second is the independent demand. Demand for a product services occur independently of demand for any other product or services, such as finishing product, service parts, lubricants, cutting oil, greases. These are the independent demand product. The dependency is vertical if the demand for one product is derived from the demand for another product. For example, demand for engine block is derived from demand for cars. Now, the dependency is horizontal if the demand for one item is not directly related but related in another manner. For example, demand for CI ingots horizontally depends upon automobile product of the company. This is about vertical demand and horizontal demand. Only independent demand item need forecasting because that of dependent items can be derived from the demand for the independent terms. Now, accounting for inventory value account for varying proportion of raw materials, WIP, work in progress parts, components और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट WIP में पड़ा है या रॉ मटेरियल है दी या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये सब क्या है, इन्वेंट्री के अंदर ही काउंट होते हैं। इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ हाई एंड दैट ऑफ WIP पार्ट्स इज़ लेस। कंटिन्यूस प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर जो है रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा होंगे और WIP वर्क इन प्रोग्रेस हमारा बिल्कुल ही लेस होगा। नाउ बैच प्रोडक्शन या जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट इज लेस एंड WIP इन्वेंट्री इज हाई। बैच प्रोडक्शन या जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर हमारा WIP वर्क इन प्रोग्रेस बिल्कुल ही हाई होगा और फिनिश प्रोडक्ट हमारे कम होंगे। दिस इज़ द अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट, लाइक अगर कैपिटल गुड्स के लिए हम रॉ मटेरियल 60%, WIP 20% और फिनिश्ड गुड्स 20%, और फिनिश्ड गुड्स एज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल 0%। गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर 30% रॉ मटेरियल होता है और वर्क इन प्रोग्रेस 55% होता है। फिनिश्ड गुड्स एट फैक्ट्री 5% होता है और 10% हमारे फिनिश्ड गुड्स है डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऐसे ही कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर 5% रॉ मटेरियल, 10% WIP इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड एट फैक्ट्री 30% and फिनिश्ड गुड्स एट डिस्ट्रीब्यूशन 55%. This is all about students inventory, very important topic industry point of view. Thank you.